अच्छा जी। तो कल हमने एक रिव्यू किया था टास्क वन राइटिंग को। तो कल कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है मतीन, आपका कोई प्रॉब्लम या आपने कोई दोबारा लिखने की कोशिश की हो? नो सर, कल बल्कि बड़ी अच्छी टिप आपने बताई कि जितने भी राइट टेबल ऑलरेडी हैं उनको रीड करें तो वाकई इंसान का माइंड ज्यादा वर्क और प्रोसेसिंग में और बेहतर लिखने की तरफ जाता है। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही है। तो बस आप एक दो दिन जो है वो पढ़ के गुजारें, और फिर जो है ना उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, और फिर आप उससे बेहतर लिख सकेंगे। तो ठीक है, फिर आज हम लिसनिंग के ऊपर कंटिन्यू करें। तो मैं ठीक है सर, अगर लिसनिंग। अ, जी जी, हम पहले लिसनिंग कर रहे थे ना, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम लिसनिंग कंटिन्यू करते हैं। आज मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, जी विजिबल है। जी बिल्कुल हो रही है सर। ठीक है, तो ये ना एक वेबसाइट है, IELTS online test.com। यहाँ पे ना मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। मॉक टेस्ट होता है प्रैक्टिस टेस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अगर यहाँ मैं पीछे बैठ जाऊँ ना, अ, तो ये देखिए, ये ना इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। आइल्स मॉक टेस्ट 2022, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 2021, 12 मंथ के। और फिर उसके अंदर फिर दो दो टेस्ट हैं। इसी तरह से जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो सकती है। सैंपल ये सारे आपने सॉल्व करने होते हैं आपको। तो मैंने यहाँ से सिर्फ ये मार्च वाला जो है किया, कोई भी रैंडम, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिस ही करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मॉड्यूल है। ये टेस्ट वन है, तो इसका लिसनिंग का मॉड्यूल, रीडिंग का मॉड्यूल, राइटिंग का, स्पीकिंग का। तो आज हम लिसनिंग की तरफ जाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हम 100% एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस इसे अटेम्प्ट करना सीखना चाह रहे हैं कि हम इसको अटेम्प्ट कैसे करना। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो आंसर लिखें अपने यहाँ पे सही। तो एक सेकंड सर, मुझे दीजिएगा, मैं लॉग इन कर। अच्छा जी। तो ये हमारा टेस्ट ओपन हो गया जिस पर मैंने क्लिक किया था। ये आप ऊपर देखिए, ये एक ना प्लेयर है। यहाँ से आप आवाज़ ऊंची नीचे कर सकते हैं। ठीक है। और ये 5 सेकंड पीछे और ये 5 सेकंड आगे। अच्छा, ये प्रैक्टिस है ना, तो इसमें आप इस ऑडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन रियल टेस्ट में जो है वो आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को देख के चलना। अच्छा, तो अभी हम इसको जो है, ये मैंने सिर्फ रिमूव करने के लिए वो जो आगे टैग आया हुआ था मैंने प्ले किया था। हम समझते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे देखिए उसने क्या लिखा हुआ, वो कह रहा है कि कंप्लीट द फॉर्म बिलो। अच्छा, पिछले एक दो लेक्चर में ना मैं एक बात जो है बार बार कह रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में उसने क्या चीज़ बोली है हमें। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे वो एग्जांपल है। मैंने तब आपको एग्जांपल्स दी थी, कोई जुबानी ओरल एग्जांपल्स दी थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई आ गई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, उसने कहा है कि क्वेश्चन में राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर। ठीक है, फॉर ईच आंसर। अच्छा, ये ना ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं नोटपैड ओपन करूं, तो कई दफा ऐसा होता है कि आता है, वो कहता है कि राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर। ठीक है। यहाँ पे उसने कहा है ना कि एंड या और दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन कई दफा आता है ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि जब हम जल्दी में पढ़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि जनाब वो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप 3 लफ्ज लिख सकते हो, 3 वर्ड्स लिख सकते हो, उसके साथ एक नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में यही समझ आता है। लेकिन ये बात गलत है। सही बात क्या है, वो कह रहा है कि या तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ड्स लिख सकते हो, या फिर आप सिर्फ
एक नंबर लिख सकते हो। ठीक है, जब आपने नंबर लिखना है तो फिर आपने वर्ड नहीं लिखना। जब आपने वर्ड लिखना है तो फिर आपने नंबर नहीं लिखना। तो यहाँ पे और का मतलब ये है। लेकिन अभी इस मौजूदा केस में हमारे पास एंड भी आ गया साथ में, तो इसका मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ड्स और एक नंबर, ठीक है, लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ एक नंबर पे लिख सकते हैं। ये समझ आ गई बात की? यस सर। चलें, ठीक हो गया। तो फिर अच्छा, उसके बाद देखें जरा, क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 के अंदर उसने पार्टीशन की हुई है, क्वेश्चन 1 से 5, ठीक है, उसके बाद 6 से 10, ठीक है, उसके बाद 11 से 15। तो अमूमन आपकी जो ऑडियो आएगी ना वो भी इसी सीक्वेंस में आएगी। तो आपने क्या करना है, आपकी ऑडियो चलने से पहले पता है, वो 30 से 60 मिनट आपके पास होंगे, याद होगा शायद आपको। उस 30 से 60 मिनट में आपने ये एक दफा देख लेना कि, सॉरी, आपने देख लेना कि ये क्या वर्ड है, क्या क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, आपने किस चीज के बारे में गौर करना है। ठीक है, तो आप इसको एक जल्दी से देख लें, फिर हम क्या करते हैं, हम इसको प्ले करते हैं। अच्छा, मैं प्ले करने लगा, मुझे बताइए कि आपको इसकी आवाज आती है या नहीं। जी, आपको आवाज आई है? नो सर। आवाज नहीं आई? इसकी आवाज कैसे शेयर होगी? There'll be time for you to read the instructions and questions, and you have a यस सर, अब chance to check your. अब आ रही है? जी। हाँ चले, ठीक है, मैं इसको शुरू से प्ले करता हूँ। You will hear a number of different recordings, and you have to answer questions on what you hear. There'll be time. अजमल, आपको अभी आवाज नहीं आई अभी, ये जो मैंने प्ले किया है? सर आवाज आ रही है, आई थिंक मैंने पहले आंसर किया होगा। अच्छा, चलो ठीक। You will hear a number of different recordings, and you have to answer questions on what you hear. There'll be time for you to read the instructions and questions, and you have a chance to check your work. All the recordings will be played only once. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to your answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a conversation between a sociology student who is doing research on the town's new community centre and a resident. First, you have some time to look at questions 1 to 5. You will see that अच्छा, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मैं तो लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग कैसे करेंगे? आप लोग ना अपने अपने लैपटॉप्स पे नोटपैड की फाइल ओपन करें, जैसे ये नोटपैड है, ठीक है, ये फाइल आप ओपन करें, एक सेकंड, और इस पे आप लिखते जाएं, 1 के आगे उसका आंसर, 2 के आगे उसका आंसर, 3 के आगे उसका आंसर, 4 के आगे उसका आंसर, ठीक है। तो बाद में फिर उसको मैच कर लेंगे कि आपका जो आंसर आएगा ना हमारे पास रिव्यू में, उसके साथ फिर आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, ठीक है। यस सर, ठीक। हाँ, आप लोगों ने फ्री नहीं बैठना, आप में से कोई बंदा भी सिर्फ ये लेक्चर सुनेगा नहीं, आप सब ने अपने आंसर लिखने हैं नोटपैड पे, ठीक है, या कोई भी आपके पास कोई कॉपी है, कॉपी पे लिख ले, रजिस्टर रजिस्टर पे लिख ले, नोटपैड पे लिख लें, लेकिन आपने नोट करने हैं इसके आंसर, ठीक है।
that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hi, good afternoon, sir. Excuse me? Could you spare a minute, please? Oh, hello. Sorry, I was in a world of my own. I didn't hear you there. No problem. My name's Katie, and I'm a second-year sociology student. We're doing a research project on the importance of community centres to local residents. May I ask, are you a resident of Malton? The answer is community centres. So, ठीक है, आपको एग्जांपल समझ आ गई ना? उसने कहा कि मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मैं रिसर्च प्रोजेक्ट कर रही हूँ किसके ऊपर? कम्युनिटी सेंटर के ऊपर। तो जो सर्वे का आंसर होगा कि वो किस इस प्रोजेक्ट के हक में वो जो सर्वे कर रही है वो किसके ऊपर होगा? कम्युनिटी सेंटर पे। तो इसलिए उसका आंसर जो है कम्युनिटी सेंटर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी बातें भी सुन के आपने यहाँ पर इसका आंसर लिखते जाना। ठीक है, Okay, sir. community centres has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Hi, good afternoon, sir. Excuse me? Could you spare a minute, please? Oh, hello. Sorry, I was in a world of my own. I didn't hear you there. No problem. My name's Katie, and I'm a second-year sociology student. We're doing a research project on the importance of community centres to local residents. May I ask, are you a resident of Malton? Yes, I am. That's perfect. Would you mind answering some questions about the facilities you use? It won't take very long. Of course. I'd be happy to answer any questions you have. Far away. Great. OK, the first questions are to do with you. So can I ask how old you are? We need to know for statistical purposes later. Well, I'd like to say 16, but I'm 59. 60 next week, in fact. Oh, congratulations for next week. Now I just need your postcode and then we'll get started. Right. Well, that's an easy one. It's HA87UP. 7A8 HQP. Was that right? No, my dear. It's HA87UP. Right. OK. Sorry for the confusion. That's quite all right. Now, what about these questions? Yes, let's get started. So, one of the most important things we need to know is which of the facilities you already use. Right, okay. OK. What about computer facilities? Do you currently use public computers anywhere in town? Yes, I do. I go to my local library. Great. Just jotting that down. OK. What about local sports facilities? Yes, I get down to the swimming pool at least twice a week. And education facilities? Are you currently attending any courses? Yes, I go to Spanish classes every Friday at the Further Education College. That's great. I must say, you're very active. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. अच्छा, तो ये मतलब कुछ समझ आई आपको क्या हुआ? जी सर. ठीक है, अच्छा इसको मैंने रेड इसलिए किया है क्योंकि ये वर्ड जो है वो मैं सही से सुन नहीं सका, उसने क्या बोला, लेकिन मैंने अंदाजे से लिख दिया। पता नहीं वो फर्दर एजुकेशन कॉलेज बोला उसने या फर्दर बोला, बहरहाल इसको हम बाद में देख लेंगे। तो अच्छा, पहले उसने क्या कहा था? Excuse me, अगर sir. जी जी I think उन्होंने further ही बोला था, but ये जो sports facilities already use था, मुझे इसकी समझ नहीं आई कि इस लाइन में समझ नहीं आई कि हमने कैसे हाँ choose करना था कि swimming pool कहाँ के.
मैं 1 मिनट आपको सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, बैक। ठीक है, आपका क्वेश्चन था कि कैसे पता चलेगा कि मतलब सिलेक्ट क्या करना है हमने। अच्छा देखिए, जब पहले फर्स्ट स्पीकर ने से पूछा था कि कोई ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसने उसके बाद कहा कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर फैसिलिटी, और फिर उसके बाद से पूछा स्पोर्ट फैसिलिटी, और उसके बाद उसने पूछा एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है। तो जब उसने कंप्यूटर फैसिलिटी बोला तो उसने उसके साथ ऑलरेडी नहीं बोला, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी बोल चुकी थी कि व्हाट यू आर ऑलरेडी यूजिंग। जी मती। ना सर आप कंटिन्यू करें, इसके बाद मैं पूछूंगा, इन्हें पहले हाँ बता लें। चलें, ठीक हो ठीक हो। तो उसने बोला कि जनाब कंप्यूटर फैसिलिटी है, और फिर आगे वेयर का मतलब है कि आप कहाँ पे वो फैसिलिटी यूज करते हो। तो उसने बोला कि मैं वो फैसिलिटी कहाँ यूज करता हूँ, लोकल लाइब्रेरी में जाके करता हूँ। फिर उसने पूछा कि स्पोर्ट्स आप खेलते हो या स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है वो कहाँ यूज करते हो। वेयर, यहाँ वेयर का मतलब है कि कहाँ पे आप यूज करते हो, मतलब फैसिलिटी जहाँ पे यूज करेंगे वहीं पे वो फैसिलिटी है। तो उसने कहा कि मैं जो है स्पोर्ट्स में स्विमिंग करता हूँ, और वो जो है स्विमिंग पूल है जिसमें मैं करता हूँ। उसके बाद उसने पूछा कि एजुकेशन फैसिलिटी जो है जहाँ कहाँ पे आप पढ़ते हो। उसने कहा जी वेयर, उसने कहा जी आई हैव यू नो, एग्जैक्ट लाइन तो नहीं याद, लेकिन उसने कहा कि मैंने जो है वो फर्दर एजुकेशन कॉलेज से जो है वो पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से सुना कि हम इसको दोबारा प्ले कर लेते हैं, फिर हम मैच करते हैं अपने आंसर्स को जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। कोई मसला नहीं, अगर हम ये टेस्ट सारा आज नहीं भी कर सकते 40 को, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। हम सिर्फ नो अभी सर, आई सीखना थिंक चाह रहे हैं। हमें अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम आगे देख लेंगे। चलें ठीक है, बहरहाल ये है कि जो हमारा मेन मकसद है वो है कि हम क्वेश्चंस को समझें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो जी मकसद ये नहीं है कि हम एक सेशन के अंदर अपना टेस्ट कंप्लीट करें। जी। दिस नॉट अ मिशन। हमारा मिशन है कि हम सीखें कि क्या चीज़ है। ठीक है, बहरहाल हम ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है, हम इसको ध्यान ओके। देते हैं। सर ये चीजें I मैम ने must हमें डेमो दिया हुआ था ना, लेकिन जस्ट हमने भी कंप्लीट टेस्ट वो करने का कहा हुआ था अगले वीक ना। तो इस सेक्शन को पहले कंप्लीट कर दो ना, क्योंकि पहले इस तरह का डेमो दिया हुआ है मैम ने हमें इस पे। चलें ठीक। say you're very active. One of the most important. Oh, can I ask how old you are? We need to. And education facilities? Are you currently attending any courses? Yes, I go to Spanish classes every Friday at the Further Education College. That's great. I must say you're very active. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Okay, we're halfway through. The next bit is all about how the community centre could be improved, if at all, that is. I see. Well, I'll give it a go. Well, firstly, I'd like to find out your views on sports facilities. Which sports do you think the community centre should offer that it doesn't already? Well, I'm not going to say swimming,
as there's no point having 2 pools in a town of this size. Let me think. What about yoga? I know it's very popular these days. Yes, yoga and badminton. I used to play, you know. Really? Yes, and I was quite good, though I'm probably a bit rusty now. It's been years. Okay. Do you think the classes should be split into groups? Yes, that's a good idea. I know that if there were classes only for pensioners, I'd definitely be more likely to play. I'm not as fast as I once was, you know. Okay, I'll just write that down. Great. Now we're nearly done. I just need to ask you some questions about education. What kind of classes do you think the centre should offer that it doesn't already? Well, I suppose the kind of thing that's no longer offered at the local college. Things like arts and crafts. Those kinds of classes have now closed as they weren't financially viable, apparently. Yes, I heard about that. It was such a shame. Those kinds of classes are so important for the psychological well-being of those most vulnerable in a community. Okay, I've written that down. Now I need to ask you whether you would be willing to pay for any of the services we were just talking about. As long as it wasn't too much, I have nothing against contributing. Something like £2 per class seems like a reasonable rate for an old man like me. Okay, and lastly then, I just need to know how regularly you think you will use the new facilities, if the community centre makes the changes you have suggested. Well, I'd say 3 times a week, which is more than I go at the moment. I only bother on Mondays and Wednesdays, as there's nothing else on during the week that interests me. But I would definitely get out of the house more if they were to make those kinds of changes. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. अच्छा, it is quite possible कि मेरे आंसर जो हैं वो आपसे डिफरेंट हो. ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे आंसर सही लिख रहा हूँ. हो सकता है मैंने भी कोई आंसर जो है गलत लिखा हो. तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी साथ साथ जो है वो लिखते जाएं. ठीक है. सर 9 वाले में 2 पॉइंट्स नहीं लिख सकते, 2 ही लिखे तो इनफ है. मैंने 2 पॉइंट्स लिखे थे. मेरा ख्याल है 2 भी काफी पाउंड्स यहाँ पे लिखा है ना उन्होंने, लेकिन हाँ, साइन तो लगे हुए. हाँ साइन तो लगा हुआ. तो लेकिन हम 2 पाउंड्स करके देख लेते हैं क्या करता है हमारे साथ. ठीक है. वैसे इसकी कोई मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पाउंड का सिंबल लगा हुआ है. सर 6 वाले में योगा और बैडमिंटन बोला था. क्या बोला था? योगा और बैडमिंटन. हाँ, तो 6 वाले में योगा एंड बैडमिंटन ही लिखा है. अच्छा, वो ठीक. अच्छा. अच्छा, अगर ये जो टाइम उन्होंने दिया ना क्वेश्चन जो है वो आंसर लिखने का, अगर आप कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहे हैं तो इस तरह से आपने ऑलरेडी अपने आंसर लिख लिए होंगे. ठीक है. आपको आंसर शीट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं. तो फिर आप क्या कर सकते हो, जल्दी से अपने आंसर्स देख के, अपने स्पेलिंग्स देख के आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर सकते हो. टाइम बचाने के लिए आप देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन दिए हैं. ठीक है. Section 2. You will hear an audio tour for Hampstead in the City of London. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen and answer questions 11 to 15.
Hi and welcome to the Walking Audio Tour Service, which offers guided audio tours of over 30 walks around London. The full list of the walks is available on our website. You have chosen the Hampstead Heath Tour Part 1, which was, in fact, the first of the walking tours that were recorded. Your walk takes you through part of the Heath, a huge, wild, open parkland, where Londoners and visitors to the city can come and enjoy some leisurely and refreshing exercise. The Heath is one of the gems of North London. When you enter the parkland, you will feel as if you are walking in the wild countryside, but you are actually still in an urban area. The walking tour begins here at the exit to Hampstead Underground Station, which is the deepest station on the London Underground system. अच्छा आप देखें मेरा ध्यान एक सेकंड के लिए इधर गया तो और मुझे पहला क्वेश्चन इसको कंटिन्यू रख ले, बाद में देखते हैं. हाँ Hope that you enjoy your experience, whether you are on your own or sharing your walk with a companion. So, let's begin your tour. We hope you enjoy it. If you turn right as you exit Hampstead Station and stay on the right-hand side of the road, the main thoroughfare, Heath Street, will take you up the hill to the Heath itself. You are now walking away from the main shops and cafes in Hampstead Village, but you can return to visit these after your walking tour for some window shopping. The village is busy during the daytime and the evenings. Now back to Heath Street. As the road winds northwards up Heath Street, you will pass some shops and restaurants on your way to the Heath. When you reach the top, the first part of the Heath that you will see on your right is the Vale of the Heath, which has some spectacular houses built on the Heath itself beside a large pond. If you go along a little further, you will come to a fork in the road, where one road, North End Way, turns to the left and goes northwest away from the Heath, and on your right is Spaniards Road, which turns northeast, cutting through the parkland. Walk along this latter road a little way and look for the first opening on your right, where a path leads you down into the wild parkland. As you descend along the pathway, you will find that the noise of the busy road that is just on your left disappears completely. You might want to take off your headphones to enjoy the delight of the sounds of the parkland. Don't imagine that there is only silence. There is the noise of the trees and the wildlife that lives there. As you walk along the path, you will come across several paths coming from the right to join the path that you are on. But keep going until you come to the first fork in the path. Now take the path that goes to your left, which will bring you shortly to the open spaces around Kenwood House. Before you hear the rest of the audio tour, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. You can either walk through the woods and enjoy being among the trees, or you can savour the other charms the Heath has to offer. You are now at Kenwood House, which is a museum open to the public. It has been used as the setting for several well-known films, and is used as a venue for a wide range of functions. For some light refreshments, there is the cafe at Kenwood House. Below Kenwood House itself, you can see the grassy slopes
which are an ideal place for picnics, and for children to run around and play games. Just beyond this picnic area is an open-air stage where music concerts are held in the summer months. You might even see the stage being prepared for a concert while you are there. You might want to explore this part of the heath at your leisure. But before you leave the heath altogether, there are two other notable features that are worth visiting. On the east side of the heath are several large ponds for segregated and mixed bathing. And if you would like a view of London, you can visit Parliament Hill, which gives you a good panorama of London that is in fact protected by law. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Section 3. You will hear a tutor talking to a student about a case study. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Hi, am I bothering you? Is it okay to see you now? Hi, Jack. No bother. Please come in. As you're a tutor this year, it's my responsibility to oversee your assignments. Now, where are my notes? Oh, yes, here they are. Okay. I see that we were going to look at your case study on the challenges of urban planning in the 21st century and how to make it as green as possible. How's it all going? Actually, I'm pretty happy with it. Can I talk you through it to make sure I'm on the right track? Of course, please do. I'll stop you if I have any questions. Okay. Well, I started by giving an overview of what green urban planning has been up until now. Firstly, there's the idea of a green belt. This is the one that everyone's heard of. But I found that while it was successful for a short time and in limited cases, it grossly oversimplified things. Well, that's a good and practical start. What else did you look at? I hope that you also considered the idea of decentralization. Yes, that was really interesting, as although there were no objections to it, and it looked good on paper, it just didn't work in practice. Yes, a conundrum indeed. However, I think you'll find that there are many fads that come and go in this area. It isn't the first, and it won't be the last to simply disappear off the face of the planet. Well, this is all very good so far. What did you look at next? I then researched the 1960s fad of building new towns on new sites, but I found that although there are isolated cases of success, they tended to cost too much time and money to build. Keeping to that theme, have you considered the idea of brownfield sites? That is, sites that previously had another use, being converted into residential areas. Like the idea of buildings that were once banks being turned into restaurants, that kind of thing. Yeah, that's right. No, I hadn't thought of that. Well, I'd say it's a pretty important option in most urban areas today, even though there have been issues with safety if the land were contaminated in any way. At least it tends to attract no objections from local residents. Okay, thanks. I'll make sure I put that in. Anything else? Well, I'm not sure about this last one, but I thought the idea of pedestrianizing central areas was an interesting concept. Do you think it's valid here?
Well, it's certainly not a bad idea. The only thing is that it would probably intensify the problem of congestion in inner city areas and would disrupt local residents' sleep if the construction work were to happen during the night. The use of loud excavators to repave the area would be inevitable. Yes, I take your point. But in some older cities, I think it's one of the few viable options. Well, as long as you state that, then it can definitely be included. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 26 to 30. So question को डाउन कर लो. Now listen and answer questions 26 to 30. Okay, so that's my introduction to urban planning sorted. But now I come to the main part, which is the case study. It was really difficult to choose, as there are so many good examples. But in the end, I settled on Curitiba, which is the capital of the South Brazilian state of Paraná. Ah, yes, nice choice. How's the research coming along? Well, to be honest, I'm finding the amount of material a bit too much. There's such a diverse range of statistics that it makes it almost impossible to be selective. Well, tell me a bit more about what you've discovered, and then we'll see if we can come up with a plan to tackle the problem. Well, it's fascinating. Local authorities managed to achieve so much since the 1960s, principally because, rather than waiting for central government initiatives, they chose a cohesive strategy where residents were consulted. Then they took their ideas and implemented them into local government planning to come up with a plan everybody was happy with. Aha, a bottom-up approach. Do go on. Well, the transport system is a real example of the town's eco-friendly image. Even though they have one of the highest number of cars per person in the country, they also have the highest number of people using public transport. This is because poor and elderly residents are able to benefit from a social fare that allows them to use the system for less. This has led to low levels of pollution, which also encourages citizens to use bicycles more. Well, that's really impressive, Jack. Well done. But I do have some suggestions to help you with finalising your case study. Please. If you're going to prove Curitiba's success, you need to refer to specifics. You mentioned pedestrian-only areas in your introduction. How about that? Yes, okay. And what about the amount of parking for all of those cars? I didn't come across that in my research, but I can look it up. Yeah, I think it's important. And what about considering where people live in relation to their place of work? If they live in the suburbs, how about mentioning how far they need to travel in order to get to work? And don't forget about their recycling strategy, including how easy it is and how much they recycle, making sure you include statistics to back it up. Okay, got it. All in all, Jack, you've really done your homework, and I very much look forward to receiving your final draft. Thanks, Professor. You've been a great help. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. Section 4. You will hear part of a talk to economics students about how to make the most of their course. First, you have some time to look at questions 31 to 40.
Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good morning, everyone, and welcome to the Stanley University School of Economics. I will be one of your lecturers on the course, and my name is Professor Whitefield. Before the academic year really gets underway, I would like to take you through some of what you can expect and to give you some general course information. Firstly, you will be attending lectures during which you will receive information about economics and the priorities that you will need to focus on. The lectures will provide you with information about the subject in a relatively condensed format. In addition, they should also provide a suitable framework for further study. Typically, this is also the first time that students get the chance to meet a researcher at the forefront of the discipline. Traditionally, lectures are seen as an essential part of the learning culture for higher education, in which undergraduate study is viewed as an induction into academic discipline and a way of viewing the world. However, although all I have said until now is true, every year undergraduate students experience problems with the techniques used in lectures. Being forewarned will hopefully help you with adjusting to these issues. The first problem is that there is little opportunity for the development of student understanding. That is, if you misunderstand something, there is no immediate opportunity to ask. Secondly, when newer teaching approaches are used, such as problem solving, learning outcomes are improved. However, these will still not replace the validity of listening and learning from an expert. Now, before you start despairing, there are several things that you can do in order to make the learning process and consequently your student life at the university easier. First and foremost, be prepared. You will be given a reading list. Don't just throw it away or forget about it. Make sure you leave enough time to go through all items on it. Once you've done that, an ideal thing to do would be to test yourself on the contents. Prepare a mini quiz while reading and go back to it before the lecture and just check you know the answers. Now, for most of you, this won't be the first time that you're studying economics, but you may have taken a gap year or had a period of time working. If this is so, and even if it isn't in fact, it always makes sense to go back and refresh your memory on those relevant theories you learned about before, as we'll definitely be referring to them. Okay, there are just a couple more ideas I'd like to suggest before I'll take any questions you may have. We are lucky enough to be living in a digital age, so use resources like the web to do some extra background research. There's no shortage of information nowadays, but just be sure that you're using reliable resources. Finally, and this is an important one, make sure you discuss ideas with your peers. They're in the same boat as you are after all, and you'll probably find that it helps make your learning more memorable. All in all, take charge of your learning and you'll find that you succeed. Now, do you have any questions before we go on to the next? That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. मैं इसको सिर्फ सबमिट कर देता हूँ, रिव्यू करता हूँ और मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं रोकी थी क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी नोटपैड पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो मेरा टाइम अप हो गया था, मैं एंटर नहीं कर सकता था, इसलिए लास्ट वाले कितने क्वेश्चन छूट गए, 4 क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इसका लास्ट वाला मैंने टिक किया था सर, वो सही है, इसका साइड है। चले जबरदस्त। ये देखें जरा, ये 2 पाउंड्स मुझे याद है,
कि 2 पाउंड्स की बात की थी, तो 2 मैंने इसलिए लिखा था कि पाउंड्स वहाँ पे सिंबल ऑलरेडी पड़ा था। देखो यहाँ पे या तो खाली 2 लिखना था या फिर इंग्लिश में 2 लिखना था, 2 पाउंड्स लिखा तो इसलिए ये गलत हो गया, वरना ये ठीक होता। ठीक है, तो आई थिंक दिस वाज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, जो करेक्ट आंसर्स की रेंज है वो आपकी 26 to 29 है। तो चलें, कुछ टाइम पड़ा है हमारे पास, तो आंसर्स जो है वो रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा देखें, ये आप सेक्शन उसने 1 कहा में था सारे कंप्लीट है। जी जी जी। सेक्शन 1 में आई थिंक सारे सही है शायद। हाँ, सेक्शन 1 ठीक होगा। सेक्शन 2 जो था उसमें मैं यही बता रहा था कि सेक्शन 2 में मेरा ध्यान जो है वो कहीं और चला गया था, तो उसमें में से 2 क्वेश्चन छूट गए। पर यहाँ पे देखें जो आइल्स है वो किस तरह ये सेक्शन में तो खैर ये इजी आया ना, तो इसमें हमें पता चल गया कि इसकी एज है वो 59 है। लेकिन अगर यही आपकी तरतीब होती ना इसके अंदर सेक्शन 3 या 4 में, तो ये काफ़ी टफ होता। यहाँ पे देखे उसने बताया पहले क्या है कि मैं मतलब आई लाइक टू से दैट आई एम 16 बट आई एम 59 60 नेक्स्ट वीक इन फैक्ट। तो इसमें एक ही लाइन में वो 3 एजेस बता गया। तो इस तरह ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस वो बोलते हैं, और कई दफा ऐसा होता है कि हम उसने हालांकि कहा भी है 59 लेकिन कंफ्यूज होकर 60 लगा, 60 के करीब करीब या तो 60 काउंट होगी, तो 60 काउंट नहीं होगी, 59 ही काउंट होगी। तो इस तरह से ये सीक्वेंस है। मतीन आपका हैंड रेज है। जी सर, ये ठीक है। दूसरे में मैं एक मिस्टेक कर गया हूँ कि इसने बोला, वो इस तरह बोलते हैं ना, H A 8 आपने लिखा है, वो H मैं समझ गया, H ही मैंने, बाकी 7 हाँ हाँ UP। तो ये बिल्कुल सिमिलर था, H और 8 उसने थोड़ा कर दिया। हाँ, बस ये एक सुनने में जो है ना वो थोड़ा सा लग जाता है। जैसे इसकी एजुकेशन देखते हैं, एजुकेशन क्या है, तो ये देखें, ये फर्दर जो है ये भी सुनने में थोड़ा इशू आ रहा था, लेकिन वो से सुनने तो पता चलता है, तो फर्दर वो ठीक हो गया, फर्दर एजुकेशन कॉलेज। ठीक है, तो इस तरह से योगा एंड बैडमिंटन, फिर पेंशनर्स, फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट 2 पाउंड्स। ठीक है, पाउंड ऑलरेडी लिखा था तो खाली 2 लिखना था हमने, और 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स अ वीक। तो सेक्शन 1 जो है वो हमारा ठीक है। सेक्शन 2 पे चलते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। जो 1 है वो तो मेरा वैसे स्किप हो गया, तो ह्यूज, ह्यूज का मतलब है वेरी लार्ज। ठीक है, तो पहला आना चाहिए था ए। उसके बाद दूसरा था डीपेस्ट स्टेशन। ठीक है, तो डीपेस्ट स्टेशन भी ठीक है। उसके बाद फॉर सम विंडो शॉपिंग, आई गेस ये भी मेरा स्किप हो गया था। ठीक है, 11 तो का 1 है यहाँ ना पे सर? हाँ, पहले वाले का ए है। हाँ ठीक है, वो मैंने टिक किया था। हाँ ठीक है, और हाँ देखें, विजिट हैम्स्टेड विलेज टू लुक एट शॉप्स। विंडो शॉपिंग क्या होती है, दुकानों में जाते हो देख के वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो सम होम विंडो शॉपिंग, यहाँ पर उसने विंडो शॉपिंग कहा, यहाँ पर उसने कहा कि एट विजिट शॉप्स। ठीक है, तो ये सेम सिनोनिम्स में आते हैं। तो आइल्स में हमेशा एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आएंगे, सिनोनिम्स भी आते हैं। यस सर, जिसके बाद एसी ले रहा था मैंने। एसी है ना? हाँ हाँ 13। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्ट ऑन द हीथ इटसेल्फ, तो ये मेरा ख्याल में लगाया था, ये ठीक है। और इसका सी है, उसमें उसने क्या कहा है, हाँ अभी वो बात कर रहा था कि पत्तों की या यू नो नेचर की आवाज़ें सुनने, एंजॉय द डिलाइट साउंड्स ऑफ द पार्क लाइन। तो यहाँ पे लिसन टू द नॉइसेस ऑफ द पार्क, ये आना था। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो कैनवुड के अंदर क्या हो रहा है आपका, कैनवुड के अंदर आपकी लाइट रिफ्रेशमेंट है, देयर इज अ कैफे एट कैनवुड। कैफे आया था, अच्छा हाँ, हैव स्नैक्स। देखें ये आपने देखा ही, स्नैक्स भी हैं, तो कैफे के अंदर आपके पास स्नैक्स होते हैं, मतलब चिप्स वगैरह या खाने पीने की जो छोटी मोटी चीज़ होती है वो सारी स्नैक्स में आती है। इवन फ्रूट्स भी कई दफ़ा स्नैक्स में कंसिडर हो जाते हैं। तो रिफ्रेशमेंट के अंदर आप खाते पीते हैं, तो फिर वो स्नैक्स में आ जाएगा, और वो आपका कैफे है। ठीक है, तो कैनवुड के अंदर आपका एफ ने जी होगा। उसके बाद ग्रासी स्लॉप विच आर आइडियल फॉर पिकनिक, तो यहाँ पे ये ठीक है। उसके बाद ओपन एयर में आपके पास म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होंगे।
तो ओपन एयर में ई, ओपन एयर में ई है। उसके बाद आपके पास जो पॉन्ड्स है वहाँ पर आपके पास मिक्स्ड बेथिंग और सेग्रीगेशन है। तो यहाँ पर क्या है, पॉन्ड्स के अंदर आप यहाँ पे बेथिंग लिखा है ना, तो बेथिंग के सिनोनिम यहाँ पे क्या होगा, स्विमिंग। तो यहाँ पे डी है, तो देखिए अगेन सिनोनिम यूज किया उन्होंने, तो डी, पॉन्ड का डी, डी ये ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है पार्लियामेंट हिल आती है, तो वहाँ पे वहाँ पार्लियामेंट हिल से आपको क्या मिलता है, लैंड व्यू ऑफ लंदन मिलता है। तो इसका सी है, तो ये आपका सेक्शन 2 पे क्लियर। उसके बाद जनाब आपको आता है सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें क्या कह रहा है कि ग्रीन बेल्ट जो है इट इज दिस इज द वन that everyone's heard of, but I found that while it was successful for a short time in the limited cases, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, सक्सेसफुल है। तो ग्रीन बेल्ट का आगे एफ आ गया। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या आएगा, डिडंट वर्क इन प्रैक्टिस, इसका मतलब है ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो अनप्रैक्टिकल, ठीक है। तो ई आ गया उसकी जगह। न्यू टाउन्स, इसका क्या है, न्यू टाउन्स में कॉस्ट टू मच, ठीक है। तो यहाँ पे 23 है ना, तो 23 का क्या है, टू एक्सपेंसिव। यहाँ पे यस इसका सर। आंसर क्या है, बी। तो ये ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ नोट पैड पे बी लिखा था, ठीक है, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि बी है, मैंने कहा चलो मैं साइड पे कहीं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर बी है। उसके बाद ब्राउन फील्ड साइट्स, वो कह रहा है कि कॉस्ट, सॉरी, इश्यूज विद सेफ्टी, हाँ, इट इज डेंजरस। तो डेंजरस लगाया था, ये क्या लग गया, 24A, हाँ ठीक है, 24 का है ये, सी लगा, टू मैनी ऑब्जेक्शंस, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे इसका ए आना था, डेंजरस ही आना था, क्योंकि उसने कहा था कि सेफ नहीं है। तो ये मेरे से गलती से लग गया, क्या हुआ, पर डेंजरस ही है। तो पांचवा जो है डिस्टरप्ट है, तो ये आपको क्या आएगा, डिस्टरप्टिव, डी आ। उसके बाद नीचे हमारे पास एमसीक्यूज है, इसमें जो गलत होगा वो देख लेते हैं। पहले का सी है तो सी लगा है, दूसरे का बी है, बी ही लगा है, तीसरे का ए है तो ए ही लगा है, ठीक है। आप लोग ने भी यही, नहीं सर, इसमें मैंने दो मिस्टेक किए। 27 पे मैंने बी लगाया, सी लगाया था। 28 बी लगाया था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अच्छा, ये पेडेस्ट्रियन पेडेस्ट्रियनाइज जोन्स यहाँ पर आना था, क्योंकि उसने कहा था कि लोगों को कितना चल के जाना पड़ेगा अपने घरों से अपने एम्प्लॉयमेंट की जगह पे। तो ये सी आना था, दूसरा रिसाइकलिंग स्कीम आना था, ये तो आना था, ठीक है। लेकिन मैंने डी और ई लगा दी, मैंने ये सब अर्बन एरियाज लगा दी, सब। ये आपका सेक्शन 3 क्लियर हो गया। और सेक्शन 4 में प्रायोरिटीज ये ठीक है, रिसर्चर ये ठीक है, हायर एजुकेशन ये ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ये भी ठीक है, फिर लर्निंग आउटकम ये भी ठीक है, फिर ऑल आइटम्स ये भी ठीक है। और उसके आगे जो है वो मेरा टाइम अप हो गया, तो मेरे को ऐड नहीं। उसके आगे मैंने एक में रिलायबल लगाया था सर, और यहाँ पे आई थिंक कुछ और है, रिलायबल के साथ और एक वर्ड भी शायद है, तो वो सही होगा नहीं। 38 अच्छा देख में, लेते हैं, 39 देख में रिलायबल है, 39 में रिलायबल है, मैंने रिलायबल रिसोर्सेज भी लगाया था, तो ये सही होगा, नहीं होगा आई थिंक। नहीं खाली रिलायबल है। देखा ना, यहाँ पे उसने सोर्सेज लिख दिया खुद ही, चेक द रिसोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन द वेब आर रिलायबल, ठीक है। तो रिसोर्सेज पहले सेंटेंस में आ गया, तो इसने कुछ दोबारा नहीं लिखा। तो अगर आपने रिसोर्सेज लिखा है साथ में, तो फिर आपका आंसर गलत है। अगर खाली रिलायबल लिखा तो फिर ठीक होता। जी मती, जी सर, ये यानी अभी लिसनिंग की आंसरिंग सारी कंप्लीट हो गई है, तो हाँ टाइम भी दो तीन मिनट ही रह गया। तो मैं ना आपसे कोई इस तरह की टिप्स लेना चाह रहा था, ये जो अभी यानी कि आइल्स के लिसनिंग स्पेसिफिक ना हो, कि हमारी ओवरऑल लिसनिंग क्योंकि इम्प्रूव होती है तो आइल्स का टेस्ट भी अच्छा जाता है। कि वैसे रूटीन लाइफ में कि कोई एक्टिविटी इंसान परफॉर्म करे जिससे लिसनिंग इम्प्रूव हो सके, कोई ऐसी टिप दे सकते हैं सर आप? अच्छी अच्छी इंग्लिश मूवीज देखो सबटाइटल्स के साथ। यस सर, ये ये जैसे कि सबसे नेट। सबसे
सबसे इसे कहते हैं ना कि ह्यूमन नेचर है, सबसे अट्रैक्टिव वे है ये। इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश मूवीज देखो, न्यूज़पेपर नहीं मैं पढ़ने को बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा बोरिंग है। लोग कहते तो है लेकिन दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। आप एक दो दिन में इंटरेस्ट लूज कर जाते हो। और दूसरी बात यह है कि आप लोग आपस में कन्वर्सेट किया करो। उससे क्या होगा, उससे दो चीज़ों की प्रैक्टिस होगी, आपकी स्पीकिंग की होगी और लिसनिंग की होगी। जब एक बंदा बोल रहा होगा तो आप सुन रहे होंगे, और जो बोल रहा होगा उसकी स्पीकिंग की हो रही होगी, आपकी लिसनिंग की हो रही होगी। जब आप रिटर्न में बोलेंगे तो आपकी स्पीकिंग की हो रही होगी, उसकी लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी। तो ये तीन चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा। मूवीज देख लें, अगर उसे मेरे एक्सपीरियंस पे जल्दी जर्नलिस्टिंग इम्प्रूव होती है। उसके बाद आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग आपस में जो है ना वो कॉन्वर्जेट किया करें इंग्लिश में। चाहे आप आइल्स जो है वो रखिए इंग्लिश का सेशन है, चाहे उल्टी सीधी टूटी फूटी जिस तरह की भी इंग्लिश है वो इसमें इंग्लिश में बोला करें, इंग्लिश में कॉन्वर्जेट किया करें। तो दैट विल बी अ ह्यूज थिंग फॉर अस टू प्रैक्टिस आवर ओके स्पीकिंग एंड इंग्लिश एंड लिसनिंग। बल्कि हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जैसी भी हमारी टूटी फूटी इंग्लिश है हम आइल्स में इंग्लिश ही बोलें, ठीक है। यस सर, दैट इट इज अ गुड यस मैम, अप्रोच। ये मैं पहले मैम को भी वो आइडिया दिया था कि हम सारे इंग्लिश में स्पीक करते ताकि थोड़ा स्पीकिंग बेहतर हो जाए। तो बोला था तो मैम हाँ कह रहे थे कुछ लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आता, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ये कह रहे थे। हाँ, नहीं वो बात ठीक है। तो उसमें यह है कि अगर समझ नहीं आती तो उसमें यह है कि स्टॉप कर ले, पूछिए कि अभी आपने क्या बोला है। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो बात बिल्कुल अप्रोच ठीक है मैम की भी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आएगी, बट दिस इज एन आर्ट सेशन। तो इसका जो मकसद है वो इंग्लिश सीखना ही है। तो जब तक बोलेंगे नहीं तो हमें आएगी नहीं, ठीक है। तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो उस टाइम भी तो प्रॉब्लम आएगा। तो उसका ये बेहतर है कि जितनी जल्दी हम बोलना शुरू कर दें उतना बेहतर। Yes, sir, I want to second your approach because we all have shyness, but if we try to resolve this one day, we will get overcome it. That's completely okay. I mean, I completely agree with you because if you speak, that's the only way that your nervousness is going to end. So the only way for us to move forward, I think, in my opinion, is that we have to speak in English more. So I think for the sake of this IELTS session, at least we should conversate in English if we can. That doesn't really matter how bad our English is. Uh, if we'll speak, it will indeed improve. Yes, sir, thank you. We are near to end almost. It is 6:59 p.m. at the moment. Yeah, thank you so much, everyone. I think that's it for today, and good job, everyone. I think today's session was quite productive, and hope that we take this productiveness to the higher level in the coming days. So that's it for today. Goodbye for now. Inshallah, we'll meet tomorrow at the same time. Right, sir. Thank you, sir. Take care. Bye bye.